21 of the Constitution that grants us a right to live. And right to live includes all the aspects of a man's life that makes a life meaningful, complete, and worth living. अब debatable topic ये है कि does right to live includes a right to die as well? What is euthanasia? इच्छा मृत्यु. क्या अगर जीने का अधिकार हमारे पास है तो अपनी इच्छा से मरने का अधिकार भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 21 ये कहता है. हाँ जी, तो सवाल ये आता है कि डज राइट टू लिव ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डाई? राइट टू लिव आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू लिव विथ ऑल सस्टेनेबल कंडीशंस, राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. बट डज इट इंक्लूड राइट टू डाई? It's a very debatable and interpretation of statutes has never been easier in this case until 2018, where such a plea was entertained by Supreme Court and a decision for a passive euthanasia was given by the Honorable Supreme Court in a matter where a person pleaded that if he is in a condition in some point of life, if he's in a vegetative state where he cannot move, where he cannot speak, then through a living will, a person said that all my life support systems should be withdrawn. Just like the way people make their organ donations by living. इसी तरह से through a living will, a person can declare in a will that if ever I come in a situation where I am not able to express myself, I am not able to speak or talk, if I am in a vegetative state, my body organs stop working, and if I am put in a life support system, let's say, then in a living will, if a person declares, the family members, the executors of the will can move to a court and request for a passive euthanasia. ये एक केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां इस तरह का डिसीजन दिया गया कि जस्ट बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन अ लिविंग विल एंड दैट वाज द लास्ट विल, तो उन्हें परमिशन ग्रांट की गई कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ किया जाए, विच इज passive euthanasia. See, there are two type of euthanasia. इच्छा मृत्यु, जहां पर एक active euthanasia, एक passive euthanasia. Right to live and right to die. There is no right to die, but right to live includes right to live with dignity. और अगर आपकी लाइफ एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई है वेयर यू कैन नॉट मूव, योर ऑर्गन्स आर अ फेलियर, ईदर यू आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड और योर हार्ट इज स्टिल नॉट वर्किंग, ब्रेन इज एक्टिव बट यू आर पुट ऑन अ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेयर यू कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट मूव. इन दैट केस अभी ये एस्टैब्लिश हुआ है दैट वी कैन रिक्वेस्ट द मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर अ पैसिव यूथनेशिया, कि अगर एक ऐसी स्टेज है जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच इज एन एंडलेस ऑप्शन की, मतलब एक लास्ट ऑप्शन है और कब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे इंसान रहेगा आपको नहीं पता, एंड इफ इट इज स्टेटेड इन अ लास्ट विल देन दैट लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैन बी विड्रॉन और स्टॉप. दैट इज नोन एज पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया है कि थ्रू आईवी और इंजेक्टेबल्स द स्लीपिंग injections are given and a person dies in a sleep. Such kind of an active euthanasia is still not permissible or legal in India. इससे पहले भी नहीं था. डिबेटेबल टॉपिक है. ऐसे बहुत सारे प्लीज आए, या तो बहुत टाइम तक डिसीजन होल्ड किया गया या उनको रिजेक्ट कर दिया गया ऑल टुगेदर. लेकिन 2018 में बिकॉज इट वाज स्टेटेड इन अ लिविंग विल, तो ये ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है रिगार्डिंग यूथनेशिया, वेयर अ राइट टू डिसाइड योर डेथ, दैट इफ अ पर्सन इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट कैन ही चूज
passive euthanasia for himself. पैसिव यूथनेशिया जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बंदा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, जहां चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिल्कुल ही मिनिमल है और अ पर्सन इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट, कि अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वहां वो विड्रॉ किया जा सकता है. दैट इज पैसिव यूथनेशिया, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन ग्रांट करी थ्रू अ लिविंग विल. एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल इलीगल एंड इट इज नॉट ग्रांटेड. Any such mode of euthanasia is still not granted in India. नीदरलैंड्स में यूथनेशिया को लेकर कानून है और वहां पर इसे लीगल माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया के कई जगहों पर लीगल है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी, पर इंडिया में ऐसा कोई कानून अभी नहीं है. राइट टू लिव एंड राइट टू डाई. अगर हमें आर्टिकल 21 राइट टू लिव ग्रांट करता है तो क्या हमें अपनी मौत चूज करने का भी अधिकार है वहां पर? ऐसा कोई कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है रिटन, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज टेक्स प्लेस इन मेनी वेज. एंड रिसेंटली 2018 के एक डिसीजन में हमने देखा कि इफ इट इज मेंशन्ड इन द लिविंग विल ऑफ अ पर्सन, तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है इस तरह से एक डिसीजन जहां पे पैसिव यूथनेशिया वाज अलाउड. हियर सुइसाइड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद यूथनेशिया. इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ले. अगर वो एक सोचने समझने की, अगर मूव करने की क्षमता में भी नहीं है, इफ अ पर्सन इज पैरालाइज, द बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग बट योर ब्रेन इज वर्किंग, योर हार्ट इज वर्किंग, यू आर एबल टू स्पीक. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, अ कोर्ट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, nobody grants you a right to commit suicide, to kill yourself. Suicide is killing yourself. Suicide is not legal, it is an illegal attempt. But and active euthanasia. Active euthanasia is anything which is injectable by a medical practitioner, of course, into a person's body that makes him die in sleep, or that deliberately kills somebody. That is known as active euthanasia, which is not permissible by law in India. आप किसी को इंजेक्टेबल्स के थ्रू, आईवीज के थ्रू ऐसा कोई सीपिंग इंजेक्शन नहीं दे सकते हो. हमने जानवरों के केस में देखा है, ऑल दोज हु हैव पेट डॉग्स, कुछ हॉर्सेस, जहां पे उनकी एक वेजिटेटिव स्टेट जब आ जाती है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जनरली उनको आईवी में एक स्लीपिंग इंजेक्शन दे देते हैं. एंड इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे एनिमल्स लॉ को लेकर. एक्टिव यूथनेशिया विद ह्यूमंस, इट इज नॉट परमिसिबल बाय लॉ, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बट पैसिव यूथनेशिया, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसी लिविंग विल में अगर मेंशन किया है इंसान ने, जिस तरह वो अपने ऑर्गन डोनेशंस मेंशन करते हैं कि अगर मैं किसी एक ऐसी स्टेज में आ जाऊं तो मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए कि मेरे घर वाले या एग्जीक्यूटर ऑफ द विल वो प्ली कर सकें कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम मेरा उस टाइम पे विड्रॉ कर दिया जाए. It is a very debatable topic that when Article 21 of the Constitution grants you a right to live, and right to live includes right to live with dignity. So does that include a right to die as well? Well, it is a very debatable and controversial topic because right to live includes right to clean air, water, good living conditions, right to live with dignity, and it does not give you a right to die, but you can choose a death or end of life through a living will if your body at some point of time reaches into a vegetative state where you are not able to speak, express yourself, you are in a coma or a vegetative state, your organs are not working and you are on a life support system. Then until 2018 it was quite debatable, but recently after a Supreme Court's decision in Common Cause versus Union of India, it was decided and it is laid down now that it is recognized that right to die with dignity, just like Constitution describes in Article 21 that our right to live is right to live with dignity, then right to die with dignity is also a fundamental right, and it is an aspect of Article 21. So a person through a living will can choose in such circumstances that their life support system can be withdrawn if they reach to such a vegetative state.
अगेन डिबेटेबल टॉपिक. 1994 तक तो ये कंप्लीटली इलीगल था पैसिव यूथनेशिया भी. To choose, either you or your relative choose, or a medical practitioner, if they withdraw a life support system of a person who can still live or survive with that support system, a medical practitioner with his own will or his own consent or own discretion cannot withdraw it. It was completely illegal until 1994. Passive euthanasia, withdrawal of any kind of a life support system by a medical practitioner. केस था पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां डिबेट थी कि वेयर राइट टू लिव अंडर आर्टिकल 21 इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंक्लूड्स राइट नॉट टू लिव. सोचने वाला है, डिबेटेबल टॉपिक है कि अगर हमारे पास जीने का अधिकार है और हमें तो राइट टू लिव इफ can be interpreted in the statutes, it also includes right not to live. मेरे पास अधिकार है कि मैं नहीं जीना चाहता हूं एक इस तरह की लाइफ जहां पे बहुत ही मिजरेबल किसी की कंडीशन हो सकती है. एंड इट वाज डिबेटेबल बट इट वाज लेड डाउन एज कंप्लीटली इलीगल. इवन पैसिव यूथनेशिया वाज completely illegal until 1994. 2006 में और एक 196th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन पास हुई. लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई 2006 में जिसमें ये प्रपोज था तो इट वाज अ लॉ टू प्रोटेक्ट टर्मिनली इल पेशेंट्स फ्रॉम सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्या है? 309 IPC is suicide, which is completely illegal. अगर आप कहते हो कि मेरे पास right to live है under Article 21, तो right not to live does not mean that you commit suicide. You cannot kill yourself, or if you are not killing yourself, which is suicide, then even a medical practitioner cannot withdraw your life support system or adopt modes such as active euthanasia to inject something into a person's body, poisonous or sleeping dose that can cause death. 1994 तक पैसिव यूथनेशिया completely illegal था. 2006 में जब ये 196 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन आती है तो वहां पे ये एक प्रपोज था कि some patients reach to such a state or they are battling a long term illness where they take such steps, they try to end their life, they try to kill themselves. बहुत फेमस केस था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कि अगर मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर स्टेट में है, मेरे पास राइट टू लिव है, तो राइट नॉट टू लिव भी होना चाहिए. आई शुड हैव अ राइट टू चूज अ डेथ ओवर लाइफ इफ लाइफ इज गेटिंग सो मिजरेबल, लिविंग कंडीशंस इतनी खराब हैं. तो वहां पर ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें प्रपोज था कि इसको इलीगल ना माना जाए यूथनेशिया को, और पैसिव यूथनेशिया के लिए प्रपोजल्स थे जहां पर कि वहां मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दे शुड बी गिवन अ राइट टू चूज ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द executors, either executors of the will or the family members of a person who's on a life support system, that whether or not to withdraw the life support system at that point of time. It is with no intentions to kill. It does not include suicide, which is still illegal, and that is 309 suicide. Right to choose how not to live, or what if I am in a vegetative state, what kind of treatment you want if you are in a vegetative state, and what type of treatment you do not want your body to go through. That is the right which was proposed in the Law Commission report, and it was laid down by the legislature later on that euthanasia can be practiced only through living wills. जिस तरह से मैं मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए एक लिविंग विल में मेंशन कर कर जाती हूँ, उसी तरह से what kind of medical treatments I would not want if I am in a state जहां पे मैं बोल नहीं सकती हूँ, मूव नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती हूँ, वो मैं पहले से डिसाइड करके जा सकती हूँ थ्रू माई लिविंग विल्स. सो दिस लिविंग विल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट टेल्स मेडिकल ट्रीटमेंट यू वुड और यू वुड नॉट वांट, एंड दैट is now laid down after the decision of Supreme Court, and it was passed. It is proposed to be made lawful by the legislature.
विल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखें। उसमें लिविंग विल क्या है कि जो जीते जी इंसान अपनी विल में अपने ऑर्गन डोनेशंस, अपने एग्जीक्यूटर सेलेक्ट करता है, सारे प्रोसीजर्स वही है, जहां पर वो चूज करता है कि इफ आई रीच इन अ स्टेट वेयर आई डू नॉट वांट टू लिव और द काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स आई वुड नॉट वांट टू गो थ्रू, वो उस लिविंग विल में मेंशन कर सकता है। दे हैव टू अपॉइंट एन एग्जीक्यूटर, द विल इज टू बी साइंड बाय द विटनेसेस, बट as I previously mentioned, in all other wills it may not necessarily be registered, but these kind of living wills should be signed by the executors to witnesses and countersigned by the judicial magistrate of first class. Then only this will is to be considered legal and will be taken into consideration. हम है euthanasia, इसका मतलब है killing somebody without pain. लिटरल मीनिंग, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग ये है, बट लीगल टर्म्स में हमें समझना चाहिए, किलिंग डज नॉट गिव ग्रांट अ राइट टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर टू विलफुली go and kill somebody. If let's say the survivors or the family members of an ill person, they say please kill this person, we do not want to bear the medical expenses and we cannot look after him or the treatment or so, no medical practitioner has been given a right to withdraw the life support system like this until and unless it is mentioned in a living will which is countersigned by the judicial magistrate of first class. Then only it becomes legal to withdraw the life support system. This is known as passive euthanasia. Active euthanasia illegal है इंडिया में अभी भी. You cannot inject anything, any kind of sleeping dose or any kind of poisonous substance through IV into a person's body that may kill him deliberately. You cannot do that. That is again illegal. लेकिन euthanasia जो लिविंग विल में आप मेंशन कर रहे हो, वी हैव अ राइट टू डाई इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम such a disease that cannot be cured, then only option of euthanasia can be granted. If a person have any chances of revival or survival, then it is to be considered whether or not to withdraw the life support system, because यहाँ पे कुछ conditions laid down है. आप इस तरह से life support system withdraw नहीं कर सकते हो unless a disease is such which cannot be cured or a person is in a vegetative state where he cannot revive. Then only passive euthanasia can be practiced. 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज करा पैसिव यूथनेशिया बाय विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑल दोज पेशेंट्स हु आर लाइंग इन अ वेजिटेटिव स्टेट. शायद 2010 में एक मूवी आई थी, बहुत खूबसूरत मूवी, संजय लीला बंसाली की गुजारिश, where the actor Hrithik Roshan, who plays a paralyzed man, and it was actually based on a true incident, जहाँ पे एक ऐसा कोर्ट में प्ली पेंडिंग था for years, but it was eventually rejected by the court, even when the mother of a paralyzed person who is in almost a vegetative state, he can speak but he cannot move, and he is living a miserable life, he's dependent, and where his mother also plead that if he wants not to live, the court should grant him for mercy killing. He pleaded for mercy killing, which was actually illegal. Mercy killing, यूथनेशिया में लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करने के लिए कहा जाता है जब इंसान बिल्कुल ही एडमिट है और आखिरी स्टेज पे आईसीयू में सपोर्ट सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है. एक बंदा है जो बोल सकता है बट ही इज पैरालाइज्ड, he cannot move on his own, and he pleaded to the court that I should be granted mercy killing. तो जहाँ पे अब तक पैसिव यूथनेशिया भी अंटिल 9 मार्च 2018 जहाँ डिसीजन दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पैसिव यूथनेशिया भी इलीगल था, एंड दिस काइंड ऑफ एक्टिव यूथनेशिया, एनी काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर 309, they are and were completely illegal and still is. Suicide, active euthanasia is still illegal. मूवी बहुत खूबसूरत थी अगर उसे एक ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वेयर द प्ली जो ऋतिक रोशन ने प्ली लगाई थी, दैट प्ली वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, द नर्स हु वाज लुकिंग आफ्टर द मैन
वो उसको बहुत तरस आता है उसकी लिविंग कंडीशन पे, एंड शी इंजेक्ट्स a sleeping dose into a man's body, which was completely illegal, and she was punished for it. And it was inspired by a true incident and a true story and a true plea which was pending in the court and which was finally rejected. तो आप कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिव यूथनेशिया प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, किसी के इंजेक्टेबल, स्लीपिंग डोज, पॉइजन इस तरह से नहीं दे सकता है इन द नेम ऑफ यूथनेशिया और मर्सी किलिंग, विच इज स्टिल इलीगल इन इंडिया. अभी भी हिंदुस्तान में कोई परमानेंट लॉ नहीं है यूथनेशिया को लेकर. ये जो डिसीजन आया है इट वाज बेस्ड ऑन अ लिविंग विल. अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट पासेस लेजिस्लेशन तो कोई यूथनेशिया, मर्सी किलिंग को लेकर लॉ आ जाए, अभी कोई हिंदुस्तान में परमानेंट लॉ नहीं है. तुमसे और कोई शिकायत नहीं. Above, anybody who is 18 years and above can make such a living will. इतना कुछ सिखाने के लिए. Of course, if it is passive euthanasia is to be practiced, that is to be practiced only by the consent of the parents of a person who is 18 years and above, or the survivors or the executors of the living will. Netherlands was the first country to legalize euthanasia, इच्छा मृत्यु. नीदरलैंड के बाद और कुछ कंट्रीज हैं, बेल्जियम है, कनाडा है, कोलंबिया है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है, एंड 6 स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हु फाइनली लीगलाइज्ड यूथनेशिया, या जिसको हम इच्छा मृत्यु कहते हैं. और 1870 में it was first proposed by Britain and it was highly opposed. It was proposed by a medical practitioner in Britain who could not see the condition of such patients, and he requested for mercy killing, that it was highly opposed and it was debatable. Later on धीरे धीरे इस पे debates चलते रहे. Legislatures जहां पार्लियामेंट ने पास किया, नीदरलैंड was the first country to make it legalize, and after that there are many countries who have legalized euthanasia, इच्छा मृत्यु. और इंडिया ने अभी रिसेंट एक लैंडमार्क जजमेंट, जैसे मैंने बोला, 9 मार्च 2018 को दिया है, जो कि बेस्ड है लिविंग विल के ऊपर. जस्ट बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन अ लिविंग विल, सो पर्सन हु हैज no chances of revival and is battling a disease which cannot be anyways cured and living condition is worse than death. तो वहां पे debatable था कि when constitution gives us a right to live, then it should grant us a right not to live or choose death. So passive euthanasia was granted, but still there is no fixed law regarding this. I hope you liked it. जो भी रिसर्च करके जो भी मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत सेंसिटिव है, एंड आई रिक्वेस्ट दैट दिस टॉपिक शुड बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड रिसर्च दैट आई हैव प्रेजेंटेड. और इसका कोई भी अदरवाइज कोई नादान बच्चे देख रहे हैं या कोई लोग जो देख रहे हैं अपनी जिंदगी से अगर परेशान हैं तो प्लीज कोई अदरवाइज इसका मीनिंग मत निकालिए. स्टिल इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं पास हुआ है. ओनली अकॉर्डिंग टू द लिविंग विल्स, जहां बहुत सारी मल्टीपल पिटिशंस पड़ी थी कोर्ट में, जो बहुत वेजिटेटिव स्टेट्स में पड़े थे, उन्हें ग्रांट किया गया है पैसिव यूथनेशिया. कानून अभी नहीं बना है, पर हाँ एक्टिव यूथनेशिया, सुइसाइड, मर्सी किलिंग अभी भी इलीगल है. तो उस चीज को समझिए, और ये एक रिसर्च और फैक्ट्स के बेसिस पे मेरा डिस्कशन था उस चैनल पे, उसे उसी तरह सुनिए, उसी तरह से समझिए.